Hello, everyone, and very good morning. I hope I'm properly audible and visible. Let's start our discussion. Right, what we were supposed to like ये जो भी चीजें हुई हैं लास्ट 2 दिन में, that's completely fine, Rishparna. That's completely fine. Yeah, right. The way things happen, like yesterday when we were actually discussing this, the Hindu in the morning, right? That is the time जब एक काफी बुरा न्यूज़ आया था about NCP leader Ajit Pawar and Maharashtra's deputy chief minister. Right. So good morning, Daksh. It was not at all welcoming news, but हो गया. So it was like ये थोड़ा सा questionable भी है. The way things are happening, अभी 6 महीने भी नहीं हुए properly. एक plane crash देखे हुए, and आज Supreme Court will hear the judicial probe into the AI like Air India 171 crash. तो वो जो होना मतलब वो जो आज होना है उसके जस्ट एक दिन पहले ये चीज हुई. सो इट वाज नॉट एट ऑल वेलकमिंग, बट लेट्स स्टार्ट आवर डे. तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार की डेथ. यस, एनसीपी के लीडर थे एंड महाराष्ट्र करंट गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे. एंड उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब लैंडिंग के टाइम पे हुआ था. The visibility was poor. I got one of the particular tweet that I saw about Simhais, which was saying कि जो leaders होते हैं मतलब there was this particular experienced person flying crew था वो. उनका ये कहना था कि जो लीडर्स होते हैं उनकी रैलीज उनकी रीच के लिए वो कई बार पुश करते हैं कि नहीं हमें तो उतरना हमें तो जाना है वगैरह वगैरह काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज द रीजन कि कई बार वो प्लेन जो है वो अनबैलेंस अनस्टेबल कंडीशन में ही उतार दिया जाता है. एंड ये एक गलत एटीट्यूड हुआ. सो लीडर शुड अंडरस्टैंड कि दैट्स कंप्लीटली फाइन, रैली है या कुछ है, बट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत नहीं है उस रैली की. तो था मतलब कई ऐसी चीज़ें निकल गई. सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि फाउल प्ले असैसिनेशन और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अजीत पवार वाज गेटिंग क्लोज टू हिज अंकल शरद पवार, और बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तुम्हें देखने को मिलेगी. अंटिल नाउ जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, लाइक ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेटर, कोई भी फाउल प्ले दिखता नहीं है. द वे थिंग्स वर, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था. एंड थोड़ा बहुत जिस तरीके से चीजें हुई हैं तो सेकंड लैंडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आया है. एंड सेकंड लैंडिंग के टाइम पे क्रैश भी हुआ बिकॉज ऑफ द aviation fuel. That blast was huge, and because of this, 5 people lost their life, including our deputy chief minister of Maharashtra. So yes, things were there, but अभी बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहला तो अजीत पवार का जो डेथ हुआ है वो, और फिर बजट सेशन होने वाला है. जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो जॉइंट सेशन है उसको क्या करना है, एड्रेस करना है ना. उन्होंने सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी, विकसित भारत है 2047, इक्विटी इन हायर एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे बात. सो उनका एक पर्टिकुलर परसेप्शन मतलब जो चीज़ हुआ वो ये. देन there is another controversy relevant to SIR. Yes, in Tamil Nadu and Assam. तमिलनाडु तो आई गेस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट. क्योंकि उनका ये कहना है कि 88% वोटर्स जिन्होंने डिलीशन फेस किया उनको कोई अपील हियरिंग जो कॉज या नोटिस होता है वो नहीं दिया गया है. सो डीएमके ने तो शायद सुप्रीम कोर्ट में बात डाल दी कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज फीजिबल. सो एसआईआर इज कंटिन्यूअस. मूविंग ऑन, कुछ और भी पर्टिकुलर चीजें थी जो, अच्छा गुवाहाटी में भी ये चीज हुई है कि असम में जो वोटर डिलीशन है उसके बारे में हाई कोर्ट में पहुंच गई पब्लिक. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज सम न्यूज़ जो पॉक्सो से रेलेवेंट था केरला वाले केस में. एंड केरला के जो रोड्स, केरला ने एक नया रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको वो दी है, दैट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सिमेटली 583 किलोमीटर्स. सो ये, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज ईरान का जो पर्टिकुलर इशू है, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट.
वो भी धीरे धीरे करके वो हो रहा है, क्या कहना चाहिए, मोटिवेशन प्रोवोकेशन की तरफ जा रहा है। स्टिल वी डोंट हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कि क्या अमेरिका एक्ट करेगा वायलेंटली अगेंस्ट दी ईरान, बट जो जिस तरीके से निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंसर्न है, राइट। सो दैट इज वन थिंग जो कि हम देख पा रहे हैं। एंड देन जो पर्टिकुलर ये मतलब मेजर न्यूज़ नहीं है, उसके अलावा व्हाट वी गॉट वाज सिंपल वही रिवीजन कि भाई साहब इंडिया ईयू का जो वो है, क्या कहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स उसको किस तरीके से देखते हैं, हु व्हेन व्हाट एंड हु इज मोर ऑफ अ विनर देन लूजर, समथिंग लाइक दिस। फिर नॉर्थ इंडिया का मौसम खराब है जिसके कारण सेंट्रल इंडिया भी परेशान है। यस, यस्टरडे आई गेस इन इंदौर मेरे फोन में जो लोएस्ट टेम्परेचर बता रहा था दैट वाज 11 डिग्री, एंड दिस वाज वेरी लो। तुम देख रहे हो, कल टी शर्ट पहन के बैठा था, आज मुझे स्वेटर पहन के बैठना पड़ रहा है। सो जोग्राफिकल उसमें भी काफी चीजें देखी गई। बारिश भी हुई है पिछले 2 दिनों में सेंट्रल इंडिया में, कई जगह पे हेलिंग हुई है, कई जगह पे पाले जो हैं वो पड़े हुए हैं। सो कई पर्टिकुलर चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है ना। सो सबसे पहले सबसे बड़ी जो न्यूज रही देश की उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज अजीत पवार किल्ड इन अ क्रैश। सो जिनको नहीं पता, लाइक पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग पॉलिटिक्स वेरी प्रॉपरली, राइट, और दे डोंट फॉलो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस यू to Mr. Ajit Pawar. This guy, I guess, is considered as one of the most influential power broker in the politics of Maharashtra after Balasaheb himself. Yes, Balasaheb Thackeray. Here we have 3 degree in North India. But no problem. Keep your like house warm. है ना, मेरे को तो ठंड पसंद है भाई, I like cold. So he is said to be one of the most powerful power broker and yeah, in Maharashtra after Bala Sahib. But I believe Bala Sahib was a kingmaker. Power broker जैसी term Bala Sahib के लिए use करना सही नहीं होगा. I admire his politics. I admire his political will. And Ajit Pawar की अगर बात करें तो he what we can say, he is consistent in Maharashtra politics from last I guess 30 years. Yes, starting from जो पुणे सहकारी बैंक वाला जो सेटअप था, राइट। सो अजीत पवार ने वहां से कहानी शुरू की थी, एंड अभी तक लाइक ही वाज डेप्यूटी सीएम फॉर 6 टाइम्स इन महाराष्ट्र। देयर वाज दिस सेइंग कि सरकार गवर्नमेंट किसी की भी बने, डेप्यूटी सीएम तो अजीत दादा ही होंगे, right. So he had his fair share of political credit as a political leader and administrator. I mean, there is this particular incident जिसमें बताया जाता है कि he is one of the person जो morning 6 से काम शुरू कर देते थे, and one of the cabinet secretary mentioned that when he was in Maharashtra and he was called for a 6 a.m. meeting, he reached by 6:15 and he saw that Ajit Pawar already has completed a meeting in some sort of file, and that is how he used to work. Second, he was called as a very instant decision maker. There were people who used to visit his house in his meeting and they used to propose things, so they used to ask for help. And he was the one जो एक कॉल में वो particular काम करा देते थे if he finds out that it is this is necessary. So yes, he was one of the particular leaders जिसको आप अलग तरीके से देखते हैं. Though he has his fair share of controversies, again, he was in government with the BJP alliance, but BJP himself accused him of 70,000 crore agriculture scam. Yes, later on when अभी recently, this is again political, but जब इन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया तो उसके बाद इनको इनके केस में क्लीन चिट मिल गई थी. He also mentioned this in certain way that it is just a kind of hoax जो सब लोग फैला रहे हैं. He was, I guess, 7 or 8 time MLA of Baramati. He was also the MP from Baramati, but he
later on left that particular place for his uncle Sharad Pawar, who was the defense minister at that time in the central government. But he was supposed to fill a nomination and won an election to become the member of parliament. So he left the seat. So he has his fair share of political, what we can say, uh, power, political contribution in the Maharashtra politics. And controversies की अगर बात की जाए तो controversies में when this particular NCP broke happened, right? That is the controversy they had. So Sharad Pawar was the mentor of Ajit Pawar. He's still like alive. That's what, right? And everybody believed that Ajit Pawar is going to be his political heir for the party. But then comes Supriya Sule, her own, like his own daughter. So there were people who started talking about who is going to take over the NCP, whether the political heir or political disciple, that is Ajit Pawar, or the daughter herself. So वहाँ पे थोड़ी सी चीजें आई, and it is said like Ajit Pawar felt sidelined after the entry, grand entry of Supriya Sule. So he broke the party and he got the NCP and his name, NCP, its name and its symbol for himself. And that is where things went bad. So he not only left the party, he actually broke the party to half and he got the power over the NCP. But from last few months, we have seen certain news that was telling that it should be like it should it is the time that the family should unite and etc etc. So यहाँ से कई controversy and कई particular sorry controversy बोलो conspiracy theories बाहर आ रही है ना एक मैंने tweet देखा which was viral yesterday that Ajit Pawar wanted to go back to his uncle and the government was supposed the Mahayuti government in Maharashtra was supposed to collapse. So इसलिए ये assassination है sabotage है ये है वो है बहुत सारी चीजें हैं, right? Everybody has started talking about it. Even the political leadership of different state was talking about it. It's something like this, but that is not something जो हमें करना चाहिए. सो जो एयरको जो डीजीसीए है जो कंपनी है ना जो उस लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती थी दैट वाज व्हाट वी कैन से वीएसआर वेंचर्स, राइट? दे क्लियरली मेंशन्ड इट वाज अ पुअर विजिबिलिटी जो कि रीजन बनी है. देयर वाज फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था लैंडिंग के लिए. देन देयर वाज सेकंड अटेम्प्ट ड्यूरिंग व्हिच the plane crashed just 100 feet like what we can say before a runway, and that is the reason it crash landed and the aviation fuel is highly inflammable and it started into a like it developed into a blast, and ultimately all five people including his security and flying captain and also the flying attendant, right, flight attendant, we lost five people in this crash. Right, our Prime Minister mentioned that Ajit Pawar was a leader of the people, a strong grassroots level connect, uh, fits ultimately what we can say his ultimate demise is very shocking and saddening. Condolences to the family. So Modi ji himself mentioned this. The state, Maharashtra state, has decided to go for 3 days mourning and official. And forensic team deploy हो चुकी है, inquiry will be conducted in the crash site and बहुत सारी चीजें. So that was the yesterday's news. अजीत पवार की अगर like बात करें तो again one of inspiring leader because कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना था कि the instant decision maker he was. So ऐसे कई लोगों को होना चाहिए. So let's hope for the best कि चीजें ठीक हों एंड उनकी फैमिली को इस बुरे टाइम पे सपोर्ट मिले, right? And parallel to this news, moving on to this one, Supreme Court will hear a plea for the judicial probe against the into the Air India 171 crash. अहमदाबाद में एक plane crash हुआ था जिसमें approximately 250 people lost their life and one survived. So उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में बात शुरू हो चुकी है, right? Now we got two things. First of all, जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक स्पीच डिलीवर किया, राइट? एंड शी टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स
जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसमें उन्होंने मेंशन किया दी विकसित भारत 2047. She also mentioned about social justice, right? She mentioned about नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज जो चीज हुई है लास्ट बजट सेशन के बाद वो अलग थी एंड शी ऑल्सो टॉक अबाउट द इक्विटी इन हायर एजुकेशन यस मैं अभी जिस पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं दैट इज यूजीसी वाला जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है पॉलिटिक्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर दीस डेज आई मीन मजेदार चीज ये है कि आई स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर आर two particular different group that has been created within the party BJP. Right, one is supporting Yogi Adityanath, another one is supporting Modi ji and his particular camp. So ये सिर्फ politics है. We are not going to discuss this. But मजा इस चीज पे आ रहा है कि there are people who are actually started talking about some other things as well. यूजीसी के लिए अपन कल बात कर सके हैं हम उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे was like is there any discrimination the answer is definitely yes कॉलेज कैंपस के बाहर वो छोड़ो लोग फ्लैट्स वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है and that is not only based on caste. I have several friends and I got several newses जहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं अगर वो साथ मतलब फ्लैट लेके बाहर रहना चाहते हैं रेंटेड फ्लैट में तो वो नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन और ईटिंग हैबिट्स हाँ ये चीजें हैं ये मैंने देखी हैं राइट सो इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री एवरीवेयर राइट हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय प्रॉपर एजुकेशन राइट अब एजुकेशन में ही पर्टिकुलर ये चीज आई है आई हैव रेड द लाइक बिल देयर वाज 7 पेज नोटिफिकेशन जो हुआ है उसमें कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन करने लायक है जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी एक्चुअली कैन मार्क डिवाइड इन द सोसाइटी ठीक है जनरल कैटेगरी वाले ही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे सेकंड थिंग दे डिडंट मेंशन अ डिस्क्रिमिनेशन विद इन द कास्ट मतलब सोशली फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो सोशली मुझे बताया गया कि मैं अपर कास्ट में हूं या जनरल कैटेगरी में हूं बट वी नो वेरी वेल दैट अपर कास्ट इज आल्सो हैविंग डिस्क्रिमिनेशन विद इन देमसेल्फ ओबीसीज आर हैविंग विद इन देमसेल्फ एससीएसटीज आर हैविंग विद इन देमसेल्फ अगर नहीं है तो एक मूवी देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा दैट इज आर्टिकल 15 बाय अनुभव सिन्हा तुम्हें उसमें एक डायलॉग मिलेगा राइट है ना जिसमें वो बताएगी कि क्या क्या होता है हमारे देश में तो उसके बारे में भी एड्रेसल नहीं है सेकंड स्क्वाड बनाने की जो बात की गई है कि देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विटी स्क्वाड अगर सारी कमेटी वगैरह रेडी तो स्क्वाड की क्या जरूरत है क्योंकि दोस्तों के बीच में तो ये एक रेगुलर वो रहता है कि हम अपने सरनेम से हम अपने कास्ट से एक दूसरे को बुलाते ही हैं मतलब आई हैव फ्रेंड सर्कल जो मुझे आधे से ज्यादा पंडित बुलाते हैं पंडित या मास्टर बुलाते हैं सो दैट इज व्हाट वी कैन डू तो वहां पे एक पर्टिकुलर चीज ये नेगेटिव लगी मुझे आई मीन वो स्क्वाड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता थर्ड देर इज अ लाइक प्रॉब्लम कि एनीबडी कैन मेक अ कंप्लेन एंड उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या रखी जाएगी सीक्रेट रखी जाएगी इफ दे वांट सो दैट इज समथिंग कि किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करके आप गायब तो यस देयर आर सम पार्ट आई थिंक जिस पे डिस्कशन होना चाहिए एंड उसके बाद उसको फाइनलाइज करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए जितने एफर्ट डाल सकते हैं हम हमें करना चाहिए बिकॉज इट एक्चुअली वीकेंस आवर कंट्री बट है सो आर प्रेसिडेंट डिलीवर्ड अ स्पीच और उसमें उन्होंने काफी चीजों की बात की सोशल जस्टिस नेशनल सिक्योरिटी विकसित भारत 2047 इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड 2026 के लिए उन्होंने काफी चीजें बोली उनका ये कहना है कि दिस इज द 75 years ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल है ना उनके बारे में बात की और अपार्ट फ्रॉम दिस कई डिफरेंट चीजें हैं लाइक कुछ पार्ट जो है द हिंदू ने जो न्यूज़पेपर ने हाईलाइट किया उनका ये कहना है कि हमें डिफरेंस डिफरेंट ओपिनियन एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट देयर हैज बीन लाइक यूनिमिटी अबाउट नथिंग बीइंग ग्रेटर देन अ नेशन सो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ भाई कितने भी डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी है बट वी एज अ नेशन इज यूनाइटेड ठीक है हेलो साहिल भावे काफी जल्दी आ गए हो तुम गुड गुड जीनियस चलो no notice on 18 8% of Tamil Nadu voters facing deletion says DMK and they move to Supreme Court
उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने 88% वोटर्स जिनका नाम वोटर लिस्ट डिलीट किया है, उनके पास किसी भी तरीके की नोटिस शेयर नहीं किया। दे डिडंट शेयर सिंगल नोटिस अबाउट द डिलीशन एंड द हियरिंग इफ दे गॉट डिलीटेड। तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आई टोल्ड यू एसआईआर इज गोइंग टू बी इन द न्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे होम मिनिस्टर असम पहुंच चुके हैं टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन। एंड जो प्रोटेस्ट है यूजीसी के अगेंस्ट इक्विटी रेगुलेशन कंटिन्यूस। कई अदर पर्टिकुलर लीडर्स जो बीजेपी के ही हैं, जो दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मेन पार्टी अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विद इन द लीडरशिप मैंने बोला कि दे स्टार्टेड हैविंग क्वेश्चन। यस, सो वहां पे कुछ चीजें हैं दैट इज टू बी देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कर्नाटका गवर्नमेंट in favor of declaring Tulu as a second official language. This is something that is good. कर्नाटका में मैंने जो मतलब मेरे दोस्त हैं जो लोकल है, they are like yes, there are like people who speaks Tulu. उनको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस तो मुझे नहीं बताया गया, बट कन्नड़ से और लाइक जो तमिलनाडु कन्नड़ के बीच में, तमिल और कन्नड़ के बीच का एक वर्जन होता है, उसमें हम ये लैंग्वेज देखते हैं। दैट इज व्हाट आई नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स। तो बॉर्डर के बीच में जो लोग रहते हैं, मतलब जो दोनों से मूव करते हैं, तो उनके बीच में लैंग्वेज होती है। सो इफ इट इज गोइंग टू बी अ सेकंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, इट माइट बी हेल्प बिल्डिंग अ बेटर वन। अगेन हमने बात की थी द वे तमिलनाडु सीक्स सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट लिस्ट पीआईएल अमिड द असम वोटर, उनका सेम वही पर्टिकुलर चीज है कि द थिंग इज डिलीशन के बाद नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो वी शुड वेट और मूव ऑन। अगेन सो लेट्स डिस्कस दिस। इसकी काफी ज्यादा वो चल रहा था केरला में, दैट इज रीजनल rapid transit system RRTS। केरला गवर्नमेंट ने कुछ 583 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है, इसको वो किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम roads as well. So this is something to be discussed because in this particular corridor, 160, 180 kilometer is going to be uh, average speed. Yes, short station interval, high passenger capacity, and it's just the way Kerala is having its beauty. Yeah, right. मैंने रोड बेस में ट्रैवल किया है केरला में, and they don't have very wide in road like 6 lane 8 lanes, but whatever they are having, that's very beautiful, well maintained, and उसमें आप रोड में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, people are well understanding as well, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी चीजें हैं उसकी अगर बात करें, तो दिस इज नोन एज के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो इसको क्या बुलाया जा रहा है, के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी आरआरटीएस, जो कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा। इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर फॉर द रेलवेज। क्या है उसके पर्टिकुलर वो, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल मिल चुका है क्या? यस, द अप्रूवल दे गॉट, इन प्रिंसिपल दे गॉट द अप्रूवल। देन हाउ इट्स गोइंग टू कनेक्ट, तो दे आर गोइंग टू कनेक्ट द एंटायर केरला। जो एंटायर केरला की जो लेंथ है उसको ये कनेक्ट करेंगे फ्रॉम कैपिटल तिरुवनंतपुरम टू साउथ टू द कासरागोड इन द नॉर्थ। पूरा का पूरा केरला का जो बेल्ट है, जो कोस्टल बेल्ट के साथ आप देखते हो, वो पूरी लेंथ जो है वो कवर करेंगे। They are going to model it in the Delhi metro corridor. Yes, the way it is. Sorry, Delhi Meerut corridor. Delhi metro बोल रहा हूँ। Delhi Meerut corridor जिस तरीके से है, and it will feature an elevated tracks tunnels with operation speed of 160 180 kilometer. So ये किसी भी एक स्टेट के थ्रू लिया गया एक बहुत ही मतलब डिफरेंट डिसीजन है, and the work will start in 2027 and they are supposed to complete it by 2033. तो ओवरऑल 6 years 7 years के स्पैन में ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इसके बाद बात करें तो जो मुंबई कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर है।
राइट, उसके लिए रोड्स वगैरह जो है ना, एंड जो पर्टिकुलर नेशनल हाईवे 66 है उसका भी डेवलपमेंट जो है उन्होंने 6 लेन के फॉर्म में करने का डिसीजन लिया। सो व्हाई दिस वाज इन न्यूज एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट अगर बात करें, तो किसी भी स्टेट के थ्रू एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ क्रिएट किया गया एक हाई स्पीड कॉरिडोर, जो बसेस, जो मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट, जो ट्रेन रेल ट्रांसपोर्ट एंड बाकी सारी चीजों को एड्रेस करे, दैट इज समथिंग जो कि जरूरी है। एंड कम ऑन, देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स जो जरूरी होता है जिस पर डिस्कशन नहीं होता, बट यहाँ पे हो रहा है, सो मेक श्योर कि इसको एक बार प्रॉपरली पढ़ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड कर्नाटका ड्राफ्ट्स वेज रूल मिरर द सेंट्रल फ्रेमवर्क। तो जो सेंट्रल के फ्रेमवर्क है उसके थ्रू वेज रूल का भी वो लेके आ गए हैं। देन दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन जो न्यूज में है कि false charges won't attract the prosecution अंडर सेक्शन 22 ऑफ पॉक्सो एक्ट। जो भी 2012 पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर अगर आप फॉल्स कंप्लेंट डालते हो, राइट, तो वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, प्रोसिक्यूशन को। एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन अब किसी भी तरीके से आपने दिया, किसी भी तरीके से वो किया है, तो ये आगे चल के एक प्रॉब्लम बनती है, तो केरला हाई कोर्ट इसको भी एड्रेस करती है। The chopper crash changed the political landscape of United Andhra. Again, अब जब अजीत पवार का पॉलिटिकल बोलो, एयरप्लेन क्रैश हुआ है, तो यू कैन सी tons of different people's name again who we lost, like हमारे पहले सीडीएस हों, या माधवराव सिंधिया हों, या लाइक संजय गांधी हों, ऐसे कई नाम अभी देखने को मिलेंगे आपको। सो आप उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। If Aadhaar can be forced same as with the passport, says सुप्रीम कोर्ट। अगेन एसआईआर वाले केस में और बाकी सारी चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की जो वैलिडिटी वो की है उस पे कई बात हो रही है। Petitioner asked SC if EC gave data to show SIR we needed was needed. यस, सो कपिल सिब्बल का ये कहना है कि 2025 के इलेक्टोरल रूल से हम आस्किंग कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके का ऐसा डेटा दिया हुआ है कि वेदर दैट एसआईआर वाज नीडेड और नॉट, और अब तक उसका जवाब नहीं आया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दे सेइंग कि अगर आधार, मतलब अभी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ, जो मैंने अभी रिसेंट मतलब कल पढ़ा था, वो ये था कि अगर आधार फोर्ज हो सकता है तो पासपोर्ट भी फोर्ज हो सकता है। एंड अगर आधार एसआईआर में वोटर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पासपोर्ट भी फोर्ज हो सकता है, तो पासपोर्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन इट वेरी करेक्टली कि भाई आपके पास बायोमेट्रिक्स है आधार बनाने के लिए। सो कई पर्टिकुलर चीजें अभी धीरे धीरे एसआईआर में आ रही है। मैंने बोला था साल भर रहने वाला है। नेक्स्ट वन, ये कुछ अच्छी पर्टिकुलर न्यूज है जो अपने को डिस्कस करनी चाहिए। इंडिया होल सिक्योरिटी डायलॉग विद सऊदी अरेबिया, आई गेस दिस इज द थर्ड एडिशन। अपन थोड़ा थोड़ा इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। दिस इज द थर्ड एडिशन, बट देर इज अ यूनिक नंबर ऑन आधार कार्ड। हाँ, दक्ष, नॉट जस्ट द यूनिक नंबर, बायोमेट्रिक भी होता है भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी डायलॉग। Actually, this is known as Security Working Group Meeting, right? Now, the meeting co-chaired by the senior officials from the Ministry of External Affairs and Saudi Arabia that focuses, right, critical security domains, जिसमें सबसे पहले आता है काउंटर टेररिज्म। यस, काउंटर पाकिस्तान नहीं, नहीं काउंटर टेररिज्म, ठीक है, काउंटर पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। Then they address the challenges that are being like arises, emerging challenges जो है। Third thing they talk about is the law enforcement, right? Yes. So counterterrorism, both nation actually what we can say, discussed about it, that they are going to have, like they are not going to tolerate any form of terrorism, right, including the cross-border terrorism. They specifically discuss the threat from the global and regional terrorist groups. When law enforcement की बात हुई है, तो they also discuss the strengthening the bilateral and legal and judicial cooperation to tackle the transnational organized crime. Then they says there are new challenges that are uncovering every day.
इनमें जो न्यू चैलेंजेस हैं उसमें सबसे पर्टिकुलर पहला है वो रेडिकलाइजेशन है। यस, रेडिकलाइजेशन जो है वो उनके लिए एक नया प्रॉब्लम दोनों देशों के लिए हो रहा है। तो इस पे भी उन्होंने डिस्कशन किया। नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर चीज के में, वो बड़ा जरूरी है बिकॉज गल्फ रीजन फॉर अस, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत व्हाट वी कैन से स्ट्रेटेजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जिस तरीके से हुआ है। ये जो डायलॉग है, जो सिक्योरिटी डायलॉग है, दैट इज व्हाट वी कैन से हाई लेवल मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, उनको एड्रेस करने के लिए स्टार्ट किया गया था, एंड दे आर स्टिल इनटू दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर also having defense partnership, that is regional balancing, कि वो गल्फ में इंडिया अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, दैट्स कोलैबोरेशन, एआई, बहुत सारी अदर चीजें जो हैं जिसका यूज करके और बाकी सब की। तो वो रेगुलर डिस्कशन जो हुआ है, आई गॉट वन ऑफ द एक्सपर्ट जो ये कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया का जो सिक्योरिटी डायलॉग है, अगर उसको हम नेक्स्ट फेज में लेके जाए तो गल्फ में जो इंडिया की प्रेजेंस है उसको बेहतर किया जा सकता है। राइट, अभी ईरान के साथ जो हो रहा है, जो उसके पहले इराक, सीरिया के साथ हुआ, अभी यमन, ओमान, इन सब के साथ जो छोटे छोटे रेडिकलाइजेशन, दूसरी चीजें देखने को मिल रही, ग्रुप्स के बारे में देखने को मिल रही, तो वो कई पर्टिकुलर चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं, और वहां पे इंडिया की प्रेजेंस उनको बेहतर कर सकती है। यस, क्योंकि जितना ज्यादा गल्फ परेशान होता है दुनिया में उतना ज्यादा पेट्रोलियम को लेकर परेशानी होती है। सो ये एक पर्टिकुलर है चीज है जिसमें है। जो नई चीज आई है वो आई है कि 2024 के बाद से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो हुई है। तो हम किस तरीके से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं। So from 2024, India secured $225 million contract from the for the artillery ammunition export for to Saudi Arabia. Right. So 2024 से अब तक $225 million के हुए। इसको बढ़ा के बेहतर करने की भी बात की गई। तो यस, जितने भी ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स और बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट है, दे कैन बिकम अ वेरी गुड मार्केट टू आवर डिफेंस इंडस्ट्री। तो इसलिए भी ये जरूरी पार्ट था। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज जो है, अगेन मैंने बोला था एयरक्राफ्ट क्रैश कल से न्यूज में है, एंड बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बहुत सारे नाम आए हैं जो एयर ट्रेजेडी में आए हैं, लाइक डॉक्टर होमी भाभा जो हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, देन महान कुमार मंगलम, संजय गांधी, वीएन सेमू, माधवराव सिंधिया, केसी बैरागी, लाइक वाईएसआर रेड्डी, हमारे सीरियस जो थे विपिन रावत, जो विजय रूपानी थे जो एयर इंडिया क्रैश में गए रिसेंटली, अजीत पवार। तो काफी सारी चीजें हैं, है ना। देन बारामती इन tears, crowd swells in town to mourn the loss of senior leader अजीत पवार। सो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेज अजीत पवार से ही बना हुआ है। द ड्रामा पॉलिटिकल लाइफ मार्क्ड बाय द ड्रामा एंड रिबेलियन, leaders across the party pays tribute to call irreparable loss, and there's this particular report जो सोशल जस्टिस को थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए आई है। आई थिंक वी डिस्कस मोर अबाउट सोशल जस्टिस। 66% sanitation workers in central government are from SC/ST and OBC group. That is department report. Yes, so 66% अगर मैं बात करूँ, तो sanitation workers जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे SC/ST OBC से आते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसको हमें मतलब एड्रेस करना जरूरी है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। मतलब जब हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं प्रयाग के महाकुंभ की, देन ऑल्सो वी गॉट दिस न्यूज कि साफ सफाई सैनिटेशन का काम जो है वो सोशली लोअर कास्ट को दिया गया है, एंड दे आर परफॉर्मिंग इट व्हेन इट कम्स टू द सैनिटेशन वर्कर, वी आर गेटिंग इट। तो सोशल जस्टिस में कहीं ना कहीं अपने को अभी और पर्टिकुलर सुधार लाने की जरूरत है। These are the reports which actually we should consider, and we should actually improve our condition for them. जिससे ऐसा ना हो कि जो सो कॉल्ड जिस तरीके से हमने बनाया है सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, वो चेंज ही ना हो। तो दिस रिपोर्ट इज समथिंग जो कि आपको करना है। ये बढ़िया न्यूज़ है, दिल्ली के डॉग लवर्स खुश हो जाएंगे दुनिया भर के। स्टेट इज बिल्डिंग कैसल इन द एयर ऑन द स्ट्रे डॉग स्टरलाइजेशन। काफी बवाल हुआ था।
दिल्ली में जब ये बात की गई थी कि डॉग्स को उठा के एक शेल्टर होम में डाल दो, राइट? उसके बाद जब बवाल हुआ तो बैकआउट करना पड़ा, फिर स्टरलाइजेशन प्रोग्राम की बात की और सुप्रीम कोर्ट इज नाउ की भाई तुम हवा में महल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। Yes. The problem with the stray dog is people are not aware about the correct ways. Like for example, मैंने जब उस टाइम पे न्यूज आई थी तो एक डॉग एक्सपर्ट थे, उनका वीडियो काफी मतलब वायरल हो रहा था ट्विटर पे। उनका ये कहना था कि जब भी हम स्ट्रे डॉग्स की बात करते हैं तो दे आर वेल अवेयर कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बट देर आर सम पर्टिकुलर ह्यूमंस जिनके हरकतों के कारण दे आर नेगेटिव, एंड उसमें भी सारे डॉग्स नेगेटिव नहीं होते, एक दो जिनके साथ हुआ होता है वो नेगेटिव होते हैं। तो ह्यूमन इंटरेक्शन पॉजिटिव करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डॉग्स आर समवन जो हमारे साथ करीब 12-13 हजार 14 हजार साल से रह रहे हैं। तो इट्स इन देयर डीएनए दैट वी आर फ्रेंडली, बट ऑल ऑफ अस आर नॉट फ्रेंडली। सो सबसे पहले तो जो अप्रोच है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। व्हेनेवर यू आर पासिंग बाय from an area जहाँ पे कुछ 10-15 stray dog हैं, so you don't need to fear, you just need to be confident and you just walk with the regular speed and go ahead. Second, if you are feeding a dog, right, the feeding should be very proper. If you are saying 7 dogs, you have to feed 7 dogs separately. If some dog is trying to eat the food of some other particular dog, तो आपको उसको रोकना पड़ता है. And if you are shouting, right, as because you are the feeder, they will respect you. If you are shouting, they will behave well. जैसी कई पर्टिकुलर चीजें उन्होंने बताई थी, तो सबसे पहले तो वो अवेयरनेस एंड अप्रोच जो है ना उसकी बात करनी चाहिए। Daksh, this is a wrong what we can say assumption. Cats do approach and attack men, but cats की जो रीच है वो डॉग से मतलब जो ह्यूमन डॉग इंटरेक्शन है, जो कैट और ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत अलग है। कैट ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है। यस, क्योंकि कैट्स इन जनरल रोड्स पे नहीं चलती बिकॉज वहां पे डॉग्स होते हैं, दे वॉक ऑन द वॉल्स, दे वॉक ऑन द लाइक अपर हाइट वाले एरिया में, सो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन उनका कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि दे डोंट बाइट, दे डू बाइट, राइट? बट दोस पुअर डॉग्स, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पुअर, लाइक अगर हमको ये पता है कि एक एरिया में बहुत सारे डॉग्स हैं और उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो सिंपली वी कैन डू अ स्टरलाइजेशन। नाउ हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दे हैव अ प्लान of action of catching dogs in which all the dogs are scared and they become kind of rebellious. So whenever some people are approaching with certain net or something like this, all the dogs just vanish away and they came back. So what we are supposed to do is to use the proper sterilization gun in which we get the sterilization vaccine or medicine, and we should shot them with the distance, and they are not also harmed and their population is not growing. But करे कौन? Problem ये है करे कौन? Right? Municipal corporation मेहनत रहने दो. It's a big joke. But we can do this. Exactly, some people in my college belong to those people category of human for no reason they start petting dogs and cats. We don't need to do that, right? I'm a dog lover. I have 3 dogs in my home. Yes, and they are well trained. They are well behaved. Not well behaved sometimes, but well trained. And I have all the sympathy with the stray dogs as well. जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं ऐसा हुआ मौका मिला, if somebody is looking weak or something, I feed them. So I feed them very properly, and I never saw them like कि कहीं वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो है प्रॉब्लम है, लोगों के पास अभी अवेयरनेस की कमी है। And this was the issue in France in 1800. They in the record said dogs shouldn't be even considered, but pays they kill all the dogs. भैया वो एक अलग अप्रोच है। 1800s में बहुत सारी चीजें जो है ना उनका और अभी का बहुत अलग है, राइट? व्हेन वी हैव इनफ पर्टिकुलर मशीनरी एंड इनफ लाइक medicine, right? Why to kill a life? I mean, dogs can be essential part of ecosystem as well, no? सो ऐसी कई चीजें हैं जो 1800s में नहीं थी बट अब हैं। तो अगर हम किलिंग द एंटायर डॉग फिटानिटी की बात करें तो वो तो गलत हो जाएगा। Getting? So let's hope for the best.
No, 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 ऋषिपर्णा बच्चे मैंने बोला ना इट्स अबाउट अवेयरनेस एंड अपब्रिंगिंग बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब when I was growing up I saw dogs interacting with family and friends and my grandfather was an animal lover so he used to pet every single animal we used to we still have cows and buffaloes in our home in the village and we have dogs and some other animals so it's all about how you see them. So that's completely fine. Awareness होगी तो बेहतर होगा. Moving on to the next one. Science में कुछ नहीं था. Make sure कि आज के editorial सारे सारे वो करना पड़ना. Right. India beautiful, but first India functional. Right. The new logic of the Chinese economy. Voters increasingly link their choices with the policies delivery. ये थोड़ा सा follow करना बहुत जरूरी चीज है. Right. Then. Uh, Amazon cuts 16,000 jobs globally to undo the pandemic era hiring. Yes, they said they are going to cut 16,000 jobs worldwide for the second major round of layoff of the company in the 3 months. And it's restructuring and it's other things. So, but 16,000 jobs जो है वो जाने वाली है Amazon वालों की. Foreign news, ready to transfer Gaza governance says Hamas. तो हमास का कहना है कि जो गाजा गवर्नेंस उनके आवाज पे था उसको वो ट्रांसफर करना चाहते हैं राइट जो भी अथॉरिटीज क्रिएट की जाएगी वहां पे एंड टेंशन हाई एज ट्रम्प सेज टाइम इज रनिंग आउट फॉर Iran. Right, yes, US president says the massive armada is heading toward Iran ready to act with the speed and the violence if needed. Tehran vows unprecedented retaliation if attack slams. US past wars officers dialogues वगैरह वगैरह. So ईरान में इंटरवीन करने के लिए राइट अमेरिका ने बोला मैं तैयार एंड पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि क्या ये हो सकता है क्या ये नहीं हो सकता. Potential I will discuss the future of Indian military presence in Syria. US calls Taiwan a vital partner after high-level tech and AI talk. ये थोड़ा सा आगे चल के देखने लायक होगा है ना the way Americans actually captured Venezuela, the way they want to intervene in the Iran. I just want कि चाइना थोड़ा सा ताइवान की तरफ ऐसा एक स्टैंड ले ले राइट एंड फिर देखेंगे कि अमेरिका किस मुंह से आएगा ये बताने के लिए कि नहीं वी आर नॉट सपोज टू डू दिस. Then comes the another what we can say dictator apart from Trump. That is Kim Jong Un says North Korea soon to unveil the next stage nuclear plans. Right? इनके अपने देश में लोगों के पास खाने नहीं है. And न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इस आदमी के पास भर भर के पैसा है. Okay. Thousand flee from Pakistan is an over the fair military raid. So India जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का लफड़ा चल रहा उसके चक्कर में कई लोग हैं जो वहां से छोड़ के घर भाग रहे हैं. इसको फॉलो या हाँ. Uh, yeah, but plane crashes are always important because plane is said to be one of the safest mode of transfer and the way things are happening all around the country. Like अभी कुछ दिन पहले दुबई में एक प्लेन क्रैश देखा था हमने फाइटर जेट था. देन अभी कुछ दिन पहले आसाम वाले रीजन में क्रैश हुआ. देन चॉपर क्रैश देन नाउ दिस उसके पहले एयर इंडिया का इतना बड़ा क्रैश. सो डेफिनेटली उस पे न्यूज आ सकती है उस पे क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉलो तो करो. Venezuela's LC says US unfreezing the sanctions fund. So वेनेजुएला के जो sanctions fund थे वो unfreeze हो रहे हैं यूएस की तरफ से. So वेनेजुएला के लिए पॉजिटिव न्यूज है. Then we got sports. भाई यार कल हार गए. Yes. हाँ like मैं मेरा दोस्त he had this particular bet. He said he told me that Abhishek Sharma uh, write a check a paper in which he mentioned how many runs he's going to score, and he used to carry that check in the pocket. And the news is he is going to score a century in today's match. And I was like, that's completely fine, but this is something that is not at all good. Nobody can see the future.
बट ही सेड नहीं नहीं ऐसा होता है, एंड आई टोल्ड हिम अगेन दैट्स नॉट जस्ट फॉर फन, आई नेवर वांटेड इट बिफोर लाइक यू स्टार्ट द कमेंट बॉक्स। मैंने कहा आज वो जीरो पे आउट नहीं हो जाए अभिषेक शर्मा को, आई सेड राइट, एंड ही डिड। यस, पहली बॉल पे आउट हो गया भाई। एंड उसका अलग से मेरे दोस्त का मैसेज आया था कि भाई तू इंटरनेशनल है, तू इंडिया को हारते हुए देखना चाहता है, बट कौन समझा। These are the just cricket, and the matches are meant to be won or lost. That's completely fine. Shivam Dubey played very well. Yes, so match was good, but हाँ हम हार गए तो दुख तो होगा। होमी जहांगीर बाबा's plane crash involvement of CIA। बच्चे लोग देखो, simple there are two three basic things that I am telling you again and again, है ना। प्लेन क्रैशेस में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, और आज भी अपन ने डिस्कस किया कि सम पीपल आर सेइंग कि इट्स एन असैसिनेशन, क्योंकि वो वापस अपने अंकल शरद पवार के साथ जाना चाहते थे, ये वो। हम तब तक ट्रुथ को नहीं देखे थे जब तक वो फाइनल ट्रुथ नहीं आता। स्पेक्युलेशन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये लोगों के काम है, वी डोंट फॉलो दैम। ठीक है। सो क्या कह रहे हो तुम, 2 दिन पहले कोरिया ने, तक 2 दिन पहले, you know who Kim Jong Un is? Kim Jong Un is Rohit Mehra from Koimelia, right? Not from Krish, Koimelia. So what he do is simple. He got a device जिससे वो nuclear weapon fire कर सकता है. So all he is doing and he just test. पर जापान जापानीज सी में तो उसका ऐसा लगता है कि भाई वो नहीं होता कि इन इन आवर रूम देयर इज अ स्पॉट, लाइक अगर आप यंग हो और क्रिकेट के फैन हो, राइट। सो एक जगह होती है जहां पे आपका टेनिस बॉल और वो जो पर्टिकुलर स्पॉट होता है वहां पे आप कंटिन्यू बाउंस करके कैच लेते हो। जापानीज सीज दैट काइंड ऑफ प्लेस फॉर नॉर्थ कोरिया एंड किम जोंग उन। लेट्स नॉट डिस्कस दिस, ज्यादा मजाक उड़ जाएगा तो पता चला नॉर्थ कोरिया वाला चिढ़ गया मेरे से। चलो, रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर्स? यस और नो? So let's start with what we are having today. Question number one. The President of India recently addressed a joint sitting parliament and emphasized accelerating the reforms to achieve developed India by which year? विकसित भारत के लिए प्रेसिडेंट ने जब जॉइंट सिटिंग के लिए पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए, प्रॉपर रिफॉर्म्स फॉर विकसित भारत के लिए कौन सा साल चुना? ऑप्शंस आर 2030, 2035, 2047, 2050। दक्ष का कहना है सी। वेरी करेक्ट गाइस, सी। हमने बात भी की थी कि जो थीम थी दैट वाज विकसित भारत 2047, राइट। किम जोंग ही नहीं, सारे कंट्रीज और सारे लीडर्स अपने सिटीजन्स पे विजिलेंट रहते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, राइट। कुछ ज्यादा रखते हैं, कुछ कम रखते हैं, बट रखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Supreme Court recently observed that Aadhaar cannot exclude from the voter identification verification merely because it can be forced. This observation was made in context of which process? So Supreme Court ने अभी बोला है कि आधार कार्ड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, आधार कार्ड को अलग नहीं किया जा सकता वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्ट बिकॉज ये फोर्ज हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन किस कंटेक्स्ट में कहा गया? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनपीआर, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर द इलेक्टोरल रोल, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट वेरिफिकेशन। वेरी करेक्ट गाइस, द करेक्ट आंसर इज सी। अपने अपन ने बात की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which article of the constitution was invoked in a PIL before the Guwahati High Court challenging the alleged misuse of objection in Assam's electoral roll revision? So असम के इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए ऑब्जेक्शन को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में किस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू ये
वो किया गया, क्या कहते हैं, पीआईएल डाली गई, आर्टिकल 32, 226, 136, 143। इंटेंशन माइट नॉट बी नेगेटिव, बट मेथड्स लुक्स नेगेटिव। सो हम डायरेक्टली भी किसी को वो नहीं कर सकते, बट दैट्स अ फैक्ट दैट एवरी गवर्नमेंट वांट सर्वेलेंस एंड like want to be vigilant against their citizens. Okay, Rishpana third ka B. Others? The very correct. That is Article 226. Yes or no? Moving on to the next one. Which constitutional body, right, recently recommended that disability certificate re-verification should be done only in case of specific suspicion, राइट? किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ये रिकमेंड किया कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसका रीवेरिफिकेशन तभी करना चाहिए जब स्पेसिफिक सस्पिशन हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग? टेल मी। भाविक, रिश्पन्ना, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि ये जो वेरिफिक लाइक, एक तो सर्टिफिकेट बनाना अपने आप में एक मेंटल चैलेंज होता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी होता है। देन उसको बार बार रीवेरिफिकेशन कराना, ये भी वो है, तो स्पेसिफिक केसेस में है। द क्वेश्चन इज, देर आर सेवरल आईएएस आईपीएस जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, डिसेबिलिटीज का रिजर्वेशन यूज करके आईएएस बने, बट दे डोंट सीम्स टू बी हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स in their bodies. So थोड़ा सा तो इस पे डिबेट बढ़ी है. Let's move to the next one. The Supreme Court extended the tenure of all women committee to monitor rehabilitation effort in the which state? किस स्टेट के रिहैबिलिटेशन के लिए ऑल वुमेन कमेटी जो है उसको एक्सटेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कहाँ पे चल रही है प्रॉब्लम? यस, द प्रॉब्लम इज इन मणिपुर। वेरी करेक्ट। मणिपुर में रिहैबिलिटेशन फिलहाल जरूरी है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, असम, दे आर डूइंग ग्रेट, राइट? सो मणिपुर जो है वहां पे जो ऑल वुमेन कमेटी है जो मॉनिटर कर रही हैं, कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स को, उसको एक्सटेंशन दिया गया है किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which legislation was interpreted by Kerala High Court while ruling the that false complaint attract to prosecution only under limited circumstances? So Kerala High Court ने किसके लिए ये रूलिंग दी कि जो false complaint होती है that attract prosecution only under the limited circumstances? Options are Juvenile Justice Act 2015, POXO Act 2012, IPC 1860, CRPC 1973। अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। हाँ, वेरी गुड भाविक। पॉक्सो के लिए डिस्कस किया था। द थिंग इज, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरीके से हम जानते हैं जुडिशरी को, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो प्रोसीजर है, उसके हिसाब से ये एक वो है कि भाई हजारों गुनेगार छूट जाए बट एक भी इनोसेंट जो हो ना उसको वो ना हो। तो यस, देर आर पीपल हु मिसयूजेस द लॉ, बट नॉट ऑल द टाइम दे गॉट लाइक सजा हर बार नहीं। मेन प्रॉब्लम विद these काइंड ऑफ केसेस और लॉज और जो पर्टिकुलर केस बन के आते हैं, उनका मीडिया ट्रायल जो है ना वो मुश्किल वाला केस होता है। उसके कारण कई लोग परेशान हो जाते हैं। इंडिया held a security dialogue with which country focusing on the counter-terrorism and transitional crime? Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman? बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, जल्दी बताओ यार। Yes, the correct answer is Saudi Arabia. UAE। सऊदी अरेबिया के साथ हुआ ना थर्ड एडिशन डायलॉग का, वही अपन ने डिस्कस किया था। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which state cabinet gave in principle approval to 583 kilometer
Regional Rapid Transit System, RRTS corridor, right? The options are Tamil Nadu, Kerala, sorry, Karnataka, Kerala, Maharashtra. बताओ. Obviously Kerala अपन ने बात करी है इन पे, है ना? Moving on to the next one. Supreme Court agreed to hear a petition seeking a judicial probe into the crash of a which Air India flight. इस एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश के लिए जो जुडिशियल प्रोब है उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है. ऑप्शन सर ए आई 302, ए आई 171, ए आई 404, ए आई 256. वेरी करेक्ट दक्ष. ए आई 171 यही वो एयर इंडिया फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी जब ये क्रैश हुई थी. राइट. चलो, which state government is considering declaring Tulu as the second official language? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट तुलु को अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की सोच रही है, कंसिडर करिए. ऑप्शन सर केरला, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा. बताओ. ये तो बहुत इजी है. यस, वेरी करेक्ट. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका. अपन ने शायद डिस्कस भी किया था. हाँ या ना? गुड. राइट. सो दिस इज इट for from my side for today. Right. Yes. And make sure that you are reading well, you are making notes well, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें, लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, एंड कल मिलते हैं. See you guys. Good day. Okay. Thank you.